In this video, I'm going to draw Lord Shiva with graphite pencil and a little bit charcoal as well. Also, here I'm going to use my customized drawing copy और जिसने भी ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है ना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. Go check it. Okay, now let's start with the rough outlines first, and for that I'm using a mechanical pencil cause ये पेपर में ना deeper marks नहीं छोड़ती और बहुत easily erase भी हो जाती है. So the outlines are the most important part of the drawing cause अगर ये सही नहीं हुई ना तो शेडिंग कितना भी अच्छा हो वो बिल्कुल खराब ही लगना है. Finally, the rough outlines are done now and अब टाइम है शेडिंग करने का. From so long, I was thinking about drawing Lord Shiva and this is the monsoon season और सावन का महीना जो भी कहना चाहते हैं and I thought this is the best time to do it. एंड ये ना मेरे नॉर्मल आर्टवर्क से काफ़ी छोटा आर्टवर्क है सो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है. ऑल्सो आई एम लविंग द प्रोसेस अ लॉट. I took around 15 minutes to complete this much portion of the drawing. Also, I used 2B and 6B grade pencils for that. For extremely darker reasons, I'm using this charcoal pencil and easily blend भी हो जाता है और graphite की तरह multiple layers भी add नहीं करनी पड़ती. Okay, I'm kind of tired now, so let's take a small tea break. और my tea is ready, so let's have it और साथ में Instagram के लिए pictures ले लेते हैं. So I bought this mini table from Amazon and अब इसमें ना मैं Instagram की pictures click करती हूँ क्योंकि इसका background बहुत ज़्यादा अच्छा है और जब भी मुझे बेड पे काम करना होता है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है. Okay, अब पिक्चर क्लिक हो चुके हैं and now let's post it on Instagram. अब सारा एक्स्ट्रा काम हो चुका है so let's get back to the